Hello students, welcome to SS classes. Today we are going to learn about the elements and the compounds. So children, what are elements? Elements are classified into metal, non-metals and metalloids. So before discussing their types in detail, let us start with the characteristics of elements. So children, characteristics of an elements are: first is, an element is made up of only one kind of atom. In my previous lecture, I told you the difference between elements and compound. At that time, I told you that the element is made up of only one kind of particle. So in other words, we can say that elements are nothing but the pure substance. If you are talking about the particular element, it means that particular element is nothing but the pure substance. For example, aluminium sheet is there, which is made up of only an atoms of aluminium. So this aluminium sheet is nothing but the pure substance. And whatever the elements are present in that, they are of same type. Fine. So this aluminium sheet is a pure substance. In the same way, if you are talking about a particular element, so that particular element is nothing but a pure substance, because it is a kind of an atom. Okay, second is, an element is a pure and homogeneous substance. As I told you, element is a pure substance. For example, I am talking about hydrogen element. It means I am talking about hydrogen atom. So that hydrogen atom is nothing but the pure substance and pure homogeneous. Third is, an element has fixed melting and boiling point. If you are talking about a particular element, for example, aluminium. So this aluminium have fixed melting point and boiling point. If I am talking about the oxygen, so oxygen have a fixed melting point and boiling point. But if one type of element combines with another type of element, and when these two elements combines chemically, that will form a compound. And the characteristics of that element in that compound changes. Simple, for example, hydrogen and oxygen. So hydrogen is one of the element which is a pure substance, and oxygen is another element which is again a pure substance. Now this hydrogen and oxygen, when they are separate, when they are in their pure form, at that time their characteristics are different. The melting point and boiling point of hydrogen is different. Melting point and boiling point of oxygen is different. But when these two elements combines chemically, that will form water molecule, and characteristics of water molecule are different. Melting point and boiling point of water is different from that of the hydrogen and oxygen alone. It means when the elements are there in their pure form, their characteristics are different. And when they combine chemically with another element, their characteristic property changes. Next is, an atom is a smallest particle of an element which take part in a chemical reaction. As I told you, every matter is made up of smallest particle of, that is called atoms. So each and every matter is made up of a small particle, and these particles are nothing but the atoms. An atom is itself an element. So for example, I am talking about the nitrogen. So I will write symbol N. If I want to write two atoms of nitrogen, then what I will write? I will write 2N. 2 number and after that capital N. So that represents 2 atoms of nitrogen. But if I want to talk that this nitrogen elements combine and form nitrogen molecule, for it means N plus N. When one atom of nitrogen combines with another atom of nitrogen, so that will form N plus N gives rise to N2. So that is the nitrogen molecule. Now this characteristics of nitrogen molecule changes. So an atom is the smallest particle of an element. If you are talking about any element, so element is itself an atom, which is the smallest particle of any matter, we can say.
and which takes parts in a chemical reaction, and these atoms are involved in the chemical reaction. Next property of element is an element may chemically reacts with another element or a compounds. So these elements can react with another element and form compound, or an element can react with another compound to form a new substance. So this is nothing but the chemical reaction where an element reacts with one another, or an element can react with a particular compound to form a new substance. An element can occur in a solid, liquid or gaseous form. These elements can be present in solid form or in a liquid form, or they can be present in a gaseous form in the atmosphere. The molecules are made up of one or more atoms of the same or different element. When elements react chemically with one another, and hence they form the compounds. These compounds are nothing but the molecules. So these molecules can be prepared from different type of element or same type of element. For example, nitrogen molecule, that is N2. This N2 is formed when one atom of nitrogen reacts with another atom of nitrogen. Means N plus N gives rise to N2. Now these two atoms of nitrogen, they are of same element. One atom is of nitrogen, second atom is again of nitrogen. So these both the atoms are of same element. Take another example where two different elements reacts with one another to form a compound. For example, magnesium, that is Mg, it reacts with oxygen, that is O2. So this Mg and oxygen are two different elements. These two atoms are of two different elements. So when these two elements react, that is Mg plus O2, it gives MgO. This is again a molecule or compound. So these molecules are made up of, they are formed from the chemical reaction between same type of element or different type of element. So this is about the properties of elements. Now children, these elements are classified as, they can be classified as the metals, non-metals or metalloids. So let us see what their classification is. So these elements are classified into metals, non-metals, metalloids and noble gases. So children, in 8th standard, you learn about the metals and the non-metals. So what are differences between metals and the non-metals? Basically, these metals occur in the solid form. These metals occur in the solid form, such as iron is there, copper, sodium, calcium, magnesium. So these metals are basically present in the solid state of the matter. But these non-metals occur in liquid form or in a gaseous form. Most of the non-metals occur in the gaseous form in the atmosphere. Here is an exception for the solid form of the metal, that is mercury. At room temperature, mercury is present in liquid form. So this is exception for the property of the hardness, that is solidity. Next property between metals and non-metal is metals are malleable. Malleable means what? On heating, they can be converted into the thin sheet. So malleability is the property of metal in which metals can be drawn into thin sheet. जैसे कि metal को heat करेंगे तो metal जो है वो thin sheet बन जाते हैं. So out of this all metal, which is highly malleable metal? So children, gold is the highly malleable metal. Next property, that is ductility. So ductility is the property of metal in which metals can be drawn into thin wires. For example, in electrical wires, the copper metal is used, or the silver can be drawn into a thin wire. So gold is again the metal which have the high ductility property. So gold is highly malleable and highly ductile metal. So malleability and ductility are the properties of metals, while non-metals are
non-malleable and non-ductile. Rather, non-metals are brittle. Means on heating they can be broken down into small pieces. ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मेटल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि मेटल्स जो है ये मैलिएबल है, मतलब उनका थीन शीट बन सकता है. वो डक्टाइल है, मतलब उनके थीन वायर्स बन सकते हैं. ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की नहीं है. अगर आप नॉन मेटल को हीट करने की कोशिश करोगे, so on heating they cannot be neither be drawn into thin wires nor into thin sheet. So on heating they can be broken down into small pieces. So जैसे कि समझो हम कार्बन की बात करते हैं. So समझो हम कार्बन को हीट करेंगे. So on beating उसके वायर नहीं बनेंगी, उसकी शीट नहीं बनेगी, rather वो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा. So ductility is the property of non-metals, in which non-metals can be broken down into fine pieces. Next difference between metals and non-metal is metals are sonorous. Means on heating they produces ringing sound, while non-metals are non-sonorous. जैसे कि आप देखते हो कि मेटल के जो भी यूटेंसिल्स वगैरह है, सो जैसे आप उनको हीट करोगे सो वहाँ पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा. बट नॉन मेटल का वैसे नहीं. जैसे कि वुड है, रबर है, इनको अगर आप हीट करोगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरसनेस. सो मेटल्स आर सोनोरस व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्ट्रसनेस. Metals are lustrous. Means metals gives shiny appearance, while non-metals are non-lustrous. They have the dull appearance. जैसे आप अगर मेटल देखते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है या तो फिर कॉपर है, सो ये जो मेटल्स है ये शाइनी अपीयरेंस है, इनको शाइन होती है. दे शाइन्स, बट द नॉन मेटल्स डू नॉट शाइन. दे आर नॉन लस्ट्रस, रादर दे हैव डल अपीयरेंस. Next property, metals are hard. Generally metals are hard. जैसे कि गोल्ड है, आयरन है, not gold, not pure gold. So आयरन है, कॉपर है, अदर मेटल्स है, ये हार्ड मेटल है. बट इनमें भी एक्सेप्शन है. जैसे कि पोटेशियम एंड सोडियम. These two metals are very soft. So we can cut them with the knife. So sodium and potassium are the soft, while mercury is present in the liquid state, and other metals are hard. So they are hard and they are present in the solid state. Property of non-metal, that non-metals are present in the gaseous form in the atmosphere, but the bromine is the non-metal. At room temperature it is present in the liquid form, and on heating it vaporizes. So it is a volatile non-metal. Next property of metal is metals have high melting and boiling point. Their melting point and boiling point is very high. Rather, non-metals melting point and boiling point is low. Metals have high density. Density of the metal is very high, but non-metal as they are present in the liquid and gaseous form, so they are less dense. Metals are a good conductor of heat and electricity, while non-metals are poor conductor of heat and electricity. So children, here the question arises that are there any metals whose boiling point, whose melting point is very low? So yes, there are two metals, that is called gallium and cesium. This gallium and cesium, these two metals have very low melting point. So their melting point is approximately 30 degrees Celsius. So if we take these two metals on our palm, gallium and cesium, if we take them on our palm, these two metal melts on our palm, because our body temperature is 37 degrees Celsius and melting point of gallium and cesium is 30 degrees Celsius approximately. So when we take these two metals on our palm, these two metal melts. So remember this. While other metals have high melting and boiling point, they are the good conductor of electricity, and that is the reason the copper is used in the electrical wire, because the metals are a good conductor of electricity, and as they are the good conductor of heat, so metal utensils are used for cooking purpose. While non-metals, they are the poor conductor of
heat and electricity. So these are the differences between metals and the non-metals. Let us see what metalloids are. So these metalloids are those elements who shows intermediate properties of metals and non-metals. Or we can say this metalloid shows some properties of metal and some properties of non-metal. So they are the intermediate elements of metals and non-metals. So let us see what their examples are. Metalloids such as boron, germanium, silicon, arsenic, antimony. So these are the examples of metalloids who are the semiconductor of electricity and heat. They are the semiconductor. Metals are the good conductor of heat and electricity, while non-metals are poor conductor, but these metalloids are semiconductor of heat and electricity. What property metallite possesses, which is a property of metal? So that is nothing but the shiny appearance. These metalloids are lustrous. They have the shiny appearance, but they possesses one property of non-metal, that is brittleness. As I told you, brittleness means on beating the non-metals can be broken down into small pieces. So this property of non-metal metalloid possesses. जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि मेटल्स जो होते हैं ये मेटल्स शाइनी अपीयरेंस शो करते हैं. So ये प्रॉपर्टी जो है मेटल की मेटालाइट शो करेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी नॉन मेटल्स की, दैट इज दे आर द ब्रिटल. मैलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल है. सो ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की मेटालाइट्स शो करेंगे. शाइनी अपीयरेंस ये मेटल की प्रॉपर्टी ये शो करेंगे एंड ब्रिटलनेस ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मेटालॉइड्स शो करेंगे. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द मेटालॉइड शोज some properties of metal and some properties of non-metal. So they are not completely metal and they are not completely non-metal. Hence the third categorization is there for the element, that is the metalloids. Fourth classification of an element is the noble gases. Now these noble gases are nothing but the zero group element, children. Why these elements are called zero group element? Because their valency is zero. In fourth chapter of the chemistry, you will come to know that why they are called inner gases, why they are called zero group element. In this chapter, you just have to remember their properties, that these noble gases have the valency zero. They neither react with the metal nor with non-metal. वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं. ये ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में स्टेबल फॉर्म में है. देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट. उनके जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से ये जो एलिमेंट्स है ये स्टेबल हो जाते हैं. ये स्टेबल है, इनर्ट है, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे. मेटल से भी नहीं, नॉन मेटल से भी नहीं. ये एटमॉस्फेयर में उनके मोनो एटॉमिक फॉर्म मतलब सिंगल एटम के फॉर्म में घूमते रहेंगे. राइट. सो दे आर द इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, दे आर द जीरो ग्रुप एलिमेंट. ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव. सो उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल हीलियम, अर्गॉन, नियॉन, then krypton, xenon, radon. These all are the examples of the noble gases. So this is about the classification of elements, where elements are categorized as metal, non-metal, metalloids and noble gases. Let us discuss last activity of this chapter, that is the preparation of mixture of iron filling and sulfur powder and the preparation of compound, that is iron sulfide from iron filling and sulfur powder. So children, you can see this activity. So children, here is that activity for the preparation of mixture of iron filling and sulfur powder and the preparation of compound, that is iron sulfide from these two substances. So let us see how this activity is. Children, in this activity you have to take a bowl, china bowl, and in that you have to add iron filling and sulfur powder. Iron filling कैसे होते हैं? Iron filling is nothing but the pieces of the ions.
सो ये आयन के पीसेस जैसे हम सल्फर पाउडर में मिक्स कर देंगे इन एनी प्रपोर्शन यू कैन ऐड। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतना ही अमाउंट आपको आयन फिलिंग लेना है या इतना ही अमाउंट ऑफ आपको सल्फर लेना है, ऐसा कोई प्रपोर्शन फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि जो मिक्सचर्स होते हैं सो मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। आप कितने भी प्रपोर्शन में दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देंगे सो बन जाएगा मिक्सचर। सो यहाँ पे कोई फिक्स प्रपोर्शन हमको लेना नहीं है। इन एनी अमाउंट ऑफ आयन फिलिंग्स यू कैन ऐड इन एनी अमाउंट ऑफ द सल्फर पाउडर। सो ये जो आयन फिलिंग्स है बच्चों ये आपको दिखते हैं ग्रेइश ब्राउनिश कलर के, और सल्फर पाउडर जो हम लेते हैं यहाँ पे आपको दिखता है येलो कलर का। सो जैसे ही आप चाइना बाउल में ये दो सब्सटेंसेस मिक्स कर दोगे आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हाँ ये आयन फिलिंग्स है और ये सल्फर पाउडर है, क्योंकि दोनों का कलर अलग अलग है। सो इफ द डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज आर फॉर्म इन द मिक्सचर दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो जब भी हम इस बाउल में आयन फिलिंग्स और सल्फर को ऐड कर देंगे और उस मिक्सचर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मिक्सचर है ये आपको कैसे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या, जिसका जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम नहीं है। ऑफ कोर्स जैसे हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया, आप देख सकते हो कोई पार्ट में आयन फिलिंग ज्यादा होगा, कोई पार्ट में सल्फर ज्यादा होगा, वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होगा। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं कि वो हेटेरोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर है। सो दिस मिक्सचर ऑफ आयन फिलिंग एंड सल्फर इज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब ये जो मिक्सचर है जिसमें हमने आयन फिलिंग और सल्फर को ऐड किया है, कैन वी सेपरेट आयन फिलिंग फ्रॉम सल्फर फ्रॉम दिस मिक्सचर? यस, बाय यूजिंग मैग्नेट वी कैन सेपरेट इट। तो जैसे कि मैग्नेट बार है, ये मैग्नेट बार है, ये मैग्नेट बार अगर हम इस मिक्सचर में इस तरीके से घुमाएंगे सो क्या होगा, ये जो आयन है ये आयन मैग्नेट बार को स्टिक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं this ion is getting stick to the magnet bar. When you remove the magnet, all ion from the mixture can be separate out, and then what will left in the china dish, the sulfur will be remain in that china dish, and ion will get attached to the magnet bar. In this way, we can separate ion fillings from the sulfur mixture by magnetism. Magnet bar से हम इसको separate कर सकते हैं। अभी हमको आयन फिलिंग नहीं सेपरेट करना है, हमको आयन फिलिंग चाइना बाउल में चाहिए और हमको सेपरेट करना है अभी सल्फर। वैसे बेसिकली दोनों सेपरेट ही हो गए, जैसे हमने आयन फिलिंग्स को निकाल लिया सल्फर वहां पे बच गया। बट हम ये भी देखेंगे कि आयंस को हम वही रहने देंगे और सल्फर को हम निकाल लेंगे। सो उसके लिए प्रोसेस क्या है, इफ यू ऐड सॉल्वेंट कॉल्ड कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्मूला इज CS2, capital C, capital S and 2 at the base. So when we use this carbon disulfide solvent, in this carbon disulfide solvent, sulfur from the mixture get dissolved. जैसे कॉमन सॉल्ट इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाता है बच्चों, वैसे ही सल्फर जो है ये सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड जो कि एक सॉल्वेंट है इसमें डिजोल्व हो जाता है। So once we add carbon disulfide into this mixture, what will happen? The sulfur get dissolved and ion fillings will remain undissolved. So when we filter out this mixture, what will happen? Ion will remain on the filter paper and filtrate contain dissolved sulfur in the carbon disulfide. So when we evaporate that mixture, the carbon disulfide can be evaporated out and sulfur will remain behind. In this way again we can separate ion filling from sulfur powder. सल्फर अगर आपको निकालना है तो आप इसमें ऐड करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड, और अगर आपको आयन निकालना है तो आप यूज करेंगे मैग्नेट। अब बच्चों आप मुझे पूछेंगे कि मैम आपने ऐसे क्यों किया, आपने पहले इन दोनों को मिक्स्ड कर दिया और वापस निकाल रहे हो, इससे क्या पर्पस हुआ, इससे क्या पर्पस हमने फुलफिल किया? तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही हम ये मिक्स्ड कर रहे हैं वापस सेपरेट कर रहे हैं। By these we are studying the properties of mixture and compound. So बच्चों यहाँ पे हमने सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी की, जब हमने ये दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया हमने कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी की, हमने प्रॉपर्टी स्टडी की अपीयरेंस। सो व्हेन दिस आयन फिलिंग इज मिक्स्ड विद द सल्फर पाउडर, हमने प्रॉपर्टी स्टडी किया कि दिस मिक्सचर अपीयर्स हेटेरोजीनियस बिकॉज इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
Second property here we have learned that is the magnetism property. The ion get attract towards the magnet and hence we can separate ion from any mixture. Third property here we have learned that the solubility, that is the sulfur is soluble in carbon disulfide and we can separate this carbon disulfide containing sulfur from the ions by the filtration. Now children, अब ये जो second part हम study करने वाले हैं activity का, that is the preparation of compound. कौन सा compound बना रहे हैं हम यही दो substances से compound बन रहा है, that is the iron sulfide, हम वो बनाने जा रहे हैं. देखो कैसे बनाएंगे. Here in the china bowl we have taken a mixture of iron filling and sulfur in any proportion. But for preparation of the compound FeS, we'll take these two elements in the fixed proportion of their masses. That is, the atomic mass of iron is, that is Fe is 56. Atomic mass क्या है? Iron का 56 और सल्फर का एटॉमिक मास है 32. तो इन दोनों के मासेस के जो प्रपोर्शन निकलेंगे, हम ये प्रपोर्शन में बच्चों ये सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे. अब क्या होगा अगर हमने ये प्रपोर्शन फॉलो नहीं किया? क्या होगा अगर हमने एक्सेस आयरन ले लिया या फिर हमने एक्सेस सल्फर ले लिया, तो क्या होगा? सो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ एलिमेंट दैट वी हैव टेकन इन एक्सेस अमाउंट, दैट विल रिमेन अनरिएक्टिव. जो भी हमने एक्सेस यूज किया है वो उतना एक्सेस सब्सटेंस रिएक्ट नहीं होगा. सो इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, एलिमेंट्स रिएक्ट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस. ये जो एलिमेंट्स है ये कैसे रिएक्ट होते हैं बच्चों? इनके मासेस के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट होते हैं. अगर हमने कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया, एक्सेस ले लिया, तो वो जो जितना एक्स्ट्रा हमने लिया है वो उतना एक्स्ट्रा जो है वो रिएक्ट नहीं होगा. जितना उनके मासेस के प्रोपोर्शन में है उतना ही रिएक्ट होगा. सो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज व्हेन द एलिमेंट रिएक्ट्स केमिकली दे ऑलवेज रिएक्ट्स विथ अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस. जैसे कि मैंने आपको मास बताया आयन का जो कि है 56 ग्राम, 56 म्यू. तो 56 ग्राम अगर हम आयन लेते हैं तो 56 ग्राम ऑफ आयन जो है उसको कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए 32 ग्राम ऑफ सल्फर लगेगा. क्लियर? बिकॉज इन दोनों के मासेस का जो रेशियो है वो क्या है? 56:32. मतलब 56 ग्राम अगर हम Fe लेंगे सो उसको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना मास लगेगा सल्फर का? दैट इज 32 ग्राम. अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि मैम इतना सब कुछ हम कैसे याद रखेंगे, इतने सारे एलिमेंट्स है, इतने सारे एलिमेंट्स के हम मासेस कैसे लर्न करेंगे? सो ये हमको अभी लर्न नहीं करना है, ये हम केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में ये सब कुछ देखने वाले. सो अभी बच्चों आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड एलिमेंट रिएक्ट्स विद अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. फाइन. नाउ नेक्स्ट, अब हम एक कंपाउंड बनाएंगे कैसे? हमने आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर उनके मासेस के फिक्स प्रोपोर्शन में ले लिया है. अभी हम ये मिक्सचर को हीट करेंगे. जैसे ही हम मिक्सचर को हीट करेंगे ये आयरन फिलिंग और इस सल्फर पाउडर एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट हो जाएंगे. तो केमिकल रिएक्शन कैसे हो जाएगी बच्चों? देखो, Fe प्लस S दैट इज सल्फर, फॉरवर्ड एरो गिव्स राइज टू FeS दैट इज आयरन सल्फाइड. अब जैसे धीरे 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 यहाँ पे आयरन सल्फाइड बनना स्टार्ट हो जाएगा. आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे? स्टार्टिंग में बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो आयन है ये आयन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. ऑन हीटिंग द आयन विल स्टार्ट melting and as it start melting it reacts with the sulfur, and once the reaction get complete you will observe that the gray color of iron sulfide is formed in the china dish. जैसे ये दो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट हो जाते हैं केमिकली ऑन हीटिंग, तो आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पे एक हार्ड मास बन जाता है, हार्ड मास जो कि है ग्रे कलर का और जिसको शाइन भी है. तो ये जो आयरन सल्फाइड जो हमने बनाया है ये कंपाउंड ऐसा है कि जिसको शाइनी अपीयरेंस है और कंप्लीटली पूरे चाइना बॉल में आपको दिखेगा कि ग्रे कलर का एक शाइनी हार्ड मास यहाँ पे बन जाता है जो कि कंपाउंड है FeS दैट इज आयरन सल्फाइड.
अब अगर आप इसका अपीयरेंस ऑब्जर्व करोगे आफ्टर सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड, अगर आप इसका अपीयरेंस ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो इसका अपीयरेंस आपको दिखेगा कि ये थ्रू आउट इट्स अपीयरेंस ये सेम है. सो कंपाउंड्स आर होमोजीनियस बिकॉज दे अपीयर्स सेम थ्रू आउट. ये पूरा का पूरा आपको सेम दिखेगा. ये वाले पार्ट में जो कलर है वही, ये वाले पार्ट में ऊपर जो कलर है वही नीचे है. सो इट अपीयर्स सेम. व्हाई? बिकॉज इट कंटेन नाउ ओनली द कंपाउंड्स ऑफ FeS. जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है वो सारे किसके हैं? FeS के है. सो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा कैसे आपको दिखेगा? होमोजीनियस. इट अपीयर्स सेम. सो कंपाउंड्स आर होमोजीनियस and the mixtures are heterogeneous because this mixture here the composition is variable and these ion fillings are scattered here and there in the sulfur, so it appear heterogeneous. So mixtures heterogeneous and compound it is homogeneous. There is no fixed proportion of elements here in the mixture, but here when the compound is formed the element reacts with a fixed proportion. Second, थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे इन बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. सो बच्चों देखो यहाँ पे हमने जो चीजें यूज की है दैट इज द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी टू सेपरेट आयन फिलिंग. जैसे कि हमने मैग्नेट बार यूज किया है और सल्फर सेपरेट करने के लिए हमने यूज किया था कार्बन डाइसल्फाइड और उसके बाद हमने उसको फिल्ट्रेशन किया. सो मैग्नेटिज्म हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया. दिस ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन. सो कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन. यहाँ पे हमने फिजिकल मेथड्स यूज किए हैं सेपरेशन के लिए, जैसे कि मैग्नेटिज्म हो या फिर फिल्ट्रेशन हो. बट यहाँ पे जैसे ही वो आयन फिलिंग और सल्फर केमिकली कंबाइन हो जाएंगे और वहां पे कंपाउंड बन जाएगा FeS, तो ये कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगे. प्रीवियसली यहाँ पर बिफोर हीटिंग जो आयन की प्रॉपर्टी थी और जो सल्फर की प्रॉपर्टी थी वो अलग अलग प्रॉपर्टीज थे. अब जब ये दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो गए तो उनके प्रॉपर्टीज चेंज हो गए. अब यहाँ पे जो FeS बन चुका है बच्चों उसके प्रॉपर्टी टोटली अलग है. अब कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे कि मिक्सचर में से हमने आयन को अलग कर लिया था बाय यूजिंग मैग्नेट, सल्फर को हमने अलग कर लिया था बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड. सो यही दो सब्सटेंसेस अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे कंपाउंड तो ये चीजें सेपरेट होंगी नहीं. जैसे कि अब यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हुआ है FeS आयन सल्फाइड, जिसमें आयन भी है और सल्फर भी है. अब अगर ये कंपाउंड में अगर हम बार मैग्नेट घुमाएंगे तो ये कंपाउंड से आयन निकल के नहीं आएगा बिकॉज दिस आयन इज केमिकली बाउंडेड विद सल्फर एंड मैग्नेटिज्म कैनॉट यूज टू सेपरेट आयन फ्रॉम इट्स कंपाउंड. अगर हम इसमें कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करेंगे जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया था सल्फर को निकालने के लिए, सो व्हेन वी ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू दिस कंपाउंड sulfur will not get dissolved as like the mixture. It not get dissolved here. Why? Because here the sulfur is chemically bounded with iron. So यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने यूज की फिजिकल प्रॉपर्टी that is solubility or filtration or magnetism. So this property we cannot use to separate components of compound. Then what property we can use? So for separation of this iron and the sulfur from its compound we can use the chemical properties. अगर हम chemical reaction use करते हैं तो यहाँ पे ये substances हम अलग अलग कर सकते हैं. If we use the electrochemical properties that can be also applicable for the separation of components of the compound. So here we use physical method of separation, here we use chemical method of separation. So children, this is about your activity of reaction of ion filling with the sulfur. Now last step of this activity is addition of acids. Children, if we add acid into the mixture of ion filling and sulfur, here is the mixture, here is the compound. So when we add acids such as HCl, that is hydrochloric acid, or H2SO4, that is the sulfuric acid, then what you will observe? When such acids are added into the mixture of ion filling and sulfur, then you will observe that hydrogen gas is getting evolved. Because metal reacts with metal such as iron from the mixture, it reacts with acid. And when metal react with the acid, the reaction produces hydrogen gas. So here you will observe that the hydrogen is getting evolved. Here you can see in the test tube
if we take iron and sulfur and if we add acid into that, so you will observe that the hydrogen gas is coming out of the test tube. How one can confirm that this gas is a hydrogen? If you bring burning mastic to it, जैसे कि जलता हुआ कैंडल है या फिर जलता हुआ कोई mastic है, अगर आप ये टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लाओगे तो आप देखोगे कि ये जो गैस है ये पॉपिंग साउंड से बर्न होता है. इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड. सो ये गैस कौन सा होगा बच्चों? ये गैस है हाइड्रोजन. सो प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन एसिड इज एडेड टू मिक्सचर ऑफ iron filling and sulfur, hydrogen is evolved. And if we add same acid to the compound of iron filling and sulfur, two words are different. Here I am using word mixture. Here I am using word compound. Compound of iron filling and sulfur, that is FeS. If we add acid to this mixture, what gas is evolved? This reaction produces hydrogen sulfide gas. Here only hydrogen gas. Here hydrogen sulfide gas, and properties of hydrogen sulfide gas are different. So what are the properties? This gas is colorless and this gas have rotten egg smell. Falling smell जिसका आता है, जैसे कि rotten egg का जैसा स्मेल आता है वैसे यहाँ से निकलते हुए गैस का आपको स्मेल आएगा. वो गैस कौन सा है बच्चों? H2S, that is हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. ये निकलेगा कंपाउंड से. और मिक्सचर में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे दैट इज H2SO4, तो कौन सा गैस आएगा? हाइड्रोजन गैस आएगा. और वही H2SO4 अगर हम कंपाउंड में ऐड करेंगे बच्चों तो कौन सा गैस आएगा? H2S. सो हियर हाइड्रोजन इवॉल्व्स and here hydrogen sulfide evolves, and both the gases have different properties. So this is about our last activity of the second chapter. So in the same activity we have also learned the difference between mixture and the compound. So this is about children our second chapter, that is matter around us pure. In next lecture we will start with the second chapter of biology, that is tissue. So children, if you like my video, please don't forget to like and subscribe. Thank you.